Hi friends, today we are going to study about the population composition. In this chapter, we are studying about the population composition based on the four factors or the four components that we are discussing in this chapter. The first one was the composition based on the language, and the another composition was uh, uh, then there was the composition based on the rural and the urban composition. So the first we already have discussed composition of the population based on the urban and the rural population. Means the ratio of the urban and the rural population and their another factors. So second composition was the linguistic composition. Linguistic composition means the population divided based on the languages they speak. And our third composition we are studying is the religious composition. In this composition, we study about the people, how the people are divided or how the people follow various religions. And we see that based on the religion, the areas, there are the particular areas which are highly populated by the particular religion. Means if we take the examples of the some states are uh, uh, Christian populated, some are Muslim populated, and then there are some Hindu populated. So the based on the religion, we are going to study about the composition of the in this chapter. So first there is the composition based on the religion. And we know that religion is one of the most dominant force affecting the culture and the political life of the most of the Indians. And based on the religion, the people's culture, people's social status, and the people's political life is affected. And Hindus are distributed as the major group in many states, ranging from 70 to 90% and the above. In India, the as you know that it is the Hindu dominated country, and the most number of the population in India follow the Hindu religion. So in some states, some most of the states are dominated by the Hindus, and the total population in those states of the Hindus is around 70 to 90%, and even in some states it is more than 90%. There are except the districts of state along Indo-Bangladesh border, Indo-Pak border, Jammu Kashmir, hill states of the northeast, and in scattered areas of Deccan Plateau and the Ganga Plains. These are the some of the states and the some of the districts where the population of Hindus is less than the other religion. मतलब जो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फॉर एग्जांपल इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो बांग्लादेश है के बॉर्डर पे जो स्टेट्स हैं कुछ वो इंडो पाक बॉर्डर सम ऑफ द स्टेट्स ऑन द इंडियन एंड पाक बॉर्डर एंड द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड देयर आर सम अदर स्टेट्स कुछ और स्टेट्स हैं जो जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स डेक्कन प्लेट्यू एंड गंगा प्लेन्स में वहां पर the population of Hindus is less than the any other religion. And if you talk about the Muslim population, Muslims are large. It is the largest religious minority in India. मतलब Hindus के बाद में जो second number पर population है वो है Muslims के. And it is concentrated in Jammu and Kashmir, certain districts of West Bengal, Kerala, and many districts of Uttar Pradesh, and in and around Delhi and Lakshadweep. So these are the places, these are the regions where these are the areas which are Muslim dominated areas. Means the number of the population following the Muslim religions
is larger than any other religion in this area. तो इनमें क्या है, कौन सा आता है? जम्मू कश्मीर, most of the states of the Jammu and Kashmir, where the majority of the population follow the Muslim religion. Apart from them, there are some states in the West Bengal. In the West Bengal, overall, it's not Muslim, but there are some states which follow Muslim. Then Kerala and the many states of the Uttar Pradesh and in and around the Delhi and Lakshadweep. So they form majority in the Kashmir Valley and the Lakshadweep. जो ज्यादातर जो मुस्लिम्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या जो जहाँ पे किसी अदर रिलीजन से ज्यादा है वो है कश्मीर वैली एंड लक्षद्वीप। इन दोनों जगह पे द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इज larger than the other population. Then third religious group or the religious population is the Christian, and Christian it is distributed mostly in the rural areas of the country. जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो ज्यादातर इंडिया के जो रूरल एरिया है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन वो रूरल एरिया में ज्यादा है। The main concentration is observed among the western coast around Goa. जो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन पाई जाती है वो है वेस्टर्न कोस्ट पर गोवा, केरला एंड ऑल्सो इन द हिल स्टेट्स ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड छोटा नागपुर areas and the hills of Manipur. In these places, population of Christian is more than the means. In these areas, the population is found in the large amount. और जो ज्यादातर जो स्टेट्स जैसे कि गोवा एंड केरला इनके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड ऑल्सो इन द हिल स्टेट मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर एंड हिल्स ऑफ मणिपुर, इन जगहों पर ज्यादातर लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं. एंड नाउ अनदर important religious group is the Sikhs, and they are concentrated in relatively small areas of the country, particularly in the states of Punjab, Haryana and Delhi. जो Sikhs हैं वो कहाँ पे ज्यादा कर पाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली. लेकिन वो एक छोटी they are in the small groups or small areas than the other religions. Then there are some other religions also, just like Jains and Buddhists, and these are the smallest religious groups in India. And Jains have major concentration in urban areas of Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra. Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra. These are the Jains. Buddhists are concentrated mostly in Maharashtra. The other areas of Buddhist majority are the Sikkim, Arunachal Pradesh, in Jammu and Kashmir, Tripura, Lahore, and Spiti in Himachal Pradesh. So this was the religious composition of Indian population. हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि पर्टिकुलर जो रिलीजन है वो पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है या वो पर्टिकुलर एरिया में उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो यहाँ इससे हमें पॉपुलेशन की स्टडी करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है. तो so we can say that religion is the one of the most important factor of the composition, which decides its characteristics, just like the educational status, economic status, social status, and the political status. These depend on the religious groups. मतलब कुछ religion में ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि some religion, the people of some religions are less prosperous or less activated in the less in political. So religion decides the characteristics of the population. Now the fourth composition in this chapter is the compositions of work population. मतलब the which type of the work or in which type of the
occupation the particular population is engaged. उसके बेस पे हम population का composition करते हैं उसको that is the particular composition. And we know that based on the work and based on the occupation, the quality of the population, the social status of the population, and the economic status, social status is affected by the work of the people, what they do. जिस तरह का लोग काम करते हैं, जिस तरह के लोगों का, because work, the income of the people depends on their work. So अगर जो लोग just like the people who are in the business sectors have the better lifestyle, better economic status, comparison to the people engaged in the labor field. So इसके अंदर हम देखेंगे कि जो population का वर्क के ऊपर किस तरह से कंपोजिशन है. The population of India, according to their economic status, divide into three groups, namely the main workers, marginal workers, and the non-workers. तीन पार्ट्स में डिवाइड की गई है, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स. In India, the population of workers, both men and marginal, is only 39.8%, leaving the vast majority of about 60% as the non-workers. तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका वर्कर जो कंपोजिशन या जो वर्कर प्रपोर्शन है दैट इज ओनली द 39.8% according to the 2011. So almost 60% of the population of India is the non-workers. This indicates an economic status in which there is a large proportion of dependent, and based on this, we can estimate, we can guess that the 60% population depends on the 40% of the worker population. मतलब 60% लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं और जो 40% काम करते हैं उनके ऊपर ये 60% पॉपुलेशन डिपेंड करती है फॉर देयर living or for their livelihood. The proportion of working population of the states and union territories show a moderate variation from about 39.6 in Goa to about 49.9 in Daman and Diu. And this proportion of the population also varies depending on the states and depending on the union territories. If we talk about the union territories, in the Goa, almost 39.6% is the working population, and if you talk about the Daman and Diu, it is the 49.9% in Daman and Diu. If we see, this was the variation in the union territories. If we talk about the states, the states with largest percentage of workers are the Himachal Pradesh, Sikkim, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Karnataka, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, and Meghalaya. These are the states where the percentage of the working population is higher than the national average, or we can say comparing to the other states. जो दूसरे स्टेट हैं इंडिया के दूसरे स्टेट से उनके कंपैरिजन में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय. In this, the working population is larger than the other states. Among the Union territories, Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu have the higher participation rate. अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो नगर एंड दादर हवेली एंड दमन एंड दीव, these are the union territories where the working population, the percentage of the working population or the worker population is higher than the other union territories. Now there are the occupational composition of Indian population shows the large proportion of primary sector workers compared to the secondary and tertiary
sectors. If we see the occupational composition of India's population, so the largest proportion of primary sectors. Primary sectors means the mining, farming. In these sectors, the larger population is engaged in the secondary and the tertiary. Secondary मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग एंड tertiary means सर्विस सेक्टर. जो प्राइमरी सेक्टर है जिसके अंदर फार्मिंग एंड माइनिंग आती है, जहाँ से रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है. उस सेक्टर में जो सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड टेरेस्ट्रियरी सेक्टर होता है सर्विसिंग. उसमें मतलब प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज है. About 54.6% of total working populations are cultivators. If we see the total population of India, about 54.6% of the working class population are the cultivators and the agricultural laborers. मतलब 54.6% people are engaged in the of the working class, not total population. We are talking about the around 39.8% of out of them 54.6 जो टोटल पॉपुलेशन है वह कल्टीवेटर्स हैं या किसान, और किसान या तो खुद किसान है या फिर मतलब खेतों में काम करने वाले लेबरर्स है. Whereas only 3.8% of workers are engaged in the household इंडस्ट्रीज. इसके अलावा जो 3.8% वर्कर्स हैं वह है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज. हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज मीन्स द स्मॉल इंडस्ट्रीज जो कि घर से ही चलाई जाती है. एंड 41.6% आर अदर वर्कर्स इंक्लूडिंग नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज. इसके अलावा 41.6% हैं जो कि नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड द अदर सर्विसेज. इसमें मतलब 3.8 तो जो घर में ही छोटी छोटी इंडस्ट्री चलाते हैं उसके अंदर एंगेज है, और उसके अलावा 41.6% जो वर्कर्स हैं वह हैं दे आर इन द लार्ज इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड अदर वर्क में एंगेज है. द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, नाउ देयर इज द वेरिएशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑल्सो. जो मेल पॉपुलेशन में उसका वर्किंग स्टेटस या वर्किंग कंपोजिशन अलग है, जेंट्स का अलग है. तो अगर हम मेल्स की बात करें तो वर्कर्स इज रिलेटिवली हाई इन द प्राइमरी सेक्टर्स एज वेल एज इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स. देयर पार्टिसिपेशन इज इंक्रीज. जो अगर वर्किंग फीमेल पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा है. बट अब उनका जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में भी धीरे धीरे जो उनकी जो परसेंटेज है उसमें इंक्रीज हो रहा है. द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज शोन अ डिक्लाइन ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स. 58.2 in 2001 to 54.6 in 2011. And now there is the one trend in the working sector or the working of the population. Slowly, the percentage of the agricultural population is declining. वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. जो एग्रीकल्चर पे जो पॉपुलेशन डिपेंड करती है उसमें धीरे धीरे गिरावट आ रही है. जैसा कि यहाँ पे इन 2001 इट वाज 58.2% और जो 2011 में 54.6% रह गया. मतलब जो खेती करने वाले लोग हैं, जो फार्मिंग के ऊपर या जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, उसमें धीरे धीरे गिरावट आ रही है. द पीपल आर शिफ्टिंग देयर ऑक्यूपेशन और देयर वर्क टू द अनदर सेक्टर. पार्टिसिपेशन रेट participation rate in the secondary and tertiary sectors has registered an increase. This indicates a shift of dependence of the workers from farm-based occupation to non-farm-based based ones, indicating the sexual shift in the economy of the country. तो इससे जो शिफ्ट हो रहा है एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में,
उससे कि जो इंडिया का जो इकोनॉमिक सेक्टर है या जो इकोनॉमिक कंडीशन है या जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके अंदर भी शिफ्ट हो रहा है, जो फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन से नॉन फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन। The special variation, if we see about the variation of the occupation based on the regions, and it's not like that in all the states the compositions of the work composition is equal. No, it depends, it varies from state to state. एक स्टेट में हो सकता है कि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग एंगेज हो, तो सेकंड स्टेट हो सकता है या कोई दूसरा स्टेट है जहाँ पे सेकेंडरी एंड टेरिस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा लोग एंगेज थे। तो इसका अगर हम देखते हैं तो द वेरिएशन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द कंट्री वेरी वाइडली। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजन में इसमें वेरिएशन आता है। द स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, नागालैंड हैव वेरी लार्ज शेयर्स ऑफ द कल्टीवेटर्स। अगर हम हिल स्टेट्स की बात करते हैं तो जस्ट लाइक हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड, इन दीज स्टेट्स द लार्ज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द कल्टीवेशन। On the other hand, states like Bihar, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, West Bengal, Madhya Pradesh have higher proportion of the agricultural laborers. इनमें क्या है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की ज्यादा है। नागालैंड और हिमाचल प्रदेश में द पीपल आर सेम, दे आर द कल्टीवेटर्स, खुद भी खेती करने वाले। इसी के कंपेरिजन में अगर हम बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, अगर इन स्टेट्स में बात करें तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है दो ज्यादा एग्रीकल्चरल लेबरर्स। एग्रीकल्चरल लेबरर्स मीन्स दे डोंट हैव देयर ओन agriculture but they work in the fields of the others. So this is the difference between the cultivators. Cultivators means they have their own farms and they cultivate themselves. Agricultural laborers means they work in the farming or the agriculture but they don't have their own farms, their own agriculture. They work in the farms of the others. The highly urbanized areas like Delhi, Chandigarh, Puducherry have a very large proportions of the workers being engaged in the other services. So big cities just like Delhi, Chhattisgarh, Chandigarh and Puducherry, these are the union territories. In these union territories, the people are engaged in the other services than the agriculture. This indicates not only availability of limited farming land, but also large-scale urbanization and industrialization requires more workers in non-farm sectors. तो इससे केवल ये इतना ही पता नहीं चलता है कि हमारे पास में लिमिटेड फार्मिंग है, लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज होता है या इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, तो the people depending on the farms slowly decreases. जितनी ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उतने ही उनमें ज्यादा लोगों की जरूरत होगी और जो फार्मिंग है उस सेक्टर में लोगों का कम होना शुरू हो जाएगा। So this is the end of the chapter and I hope you will go through all the lessons in all the videos I have uploaded in this chapter. Thank you.